So here I'm using Waverly Ocean Blue with Waverly it's crimson red, I guess. So just trying to blend the colors and make little bit hot pink. So as you can see, and adding little bit water to make the paint little bit thinner. Try to do my cabinet. This is the सोच रही हूँ अगर if I do like this तो maybe I can save this and then I can do the gold. I wanted to get the other paint but the thing is कि एक तो वो सब ऑनलाइन आते हैं, दूसरा बहुत टाइम लगता है और डेक्सीबेल के पेंट्स भी महंगे हैं और स्टोरों में कहीं मिलते नहीं हैं, तो दैट्स नॉट लाइक मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि ऑनलाइन ऑर्डर करें एंड देन सिट एंड वेट. So I don't know, this thing is not everybody's favorite coloring, but first I was thinking कि मैं इसको change नहीं करूँ, but ये है कि I'm so tired of this, seeing this, and then I have my walls are also my floors are also dark. So वैसे भी ये मेरा काफ़ी सालों से मेरा पीस है. I don't know, I think 15 years तो हो गए हैं, but it's a very beautiful piece. So just to give some makeover. I get. So chalk paint जो है वो ज़रा बड़ा इजीली ले लेता है. स्प्रे पेंट का ये कि तो वो हर डायरेक्शन में उड़ा था, दूसरा के मतलब वो सही तरह फिनिश नहीं आई थी. तो चॉक पेंट का ये कि मोस्टली एक आध कोट्स में जो है आपका हो जाता है. अब देखते हैं कि इसको कितने कोट्स लगेंगे. Okay, so viewers, there is no right and wrong to paint. एक कोट भी करूँगी, of course एक कोट में it's not going to cover.
पहले मैंने ब्रश से किया है, 2 कोट्स अभी सामने किए हैं, और अब मैं जैसे थोड़ा सा स्टेपलिंग टाइप कर रही हूँ, ऐसे थोड़ा सा टेक्सचर देने के लिए। मैंने इसके नीचे प्राइमर नहीं किया वाइट, ताकि मैं थोड़ा सा चाह रही थी कि जो ओल्ड वुड है उसका थोड़ा सा टेक्सचर नज़र आए। क्योंकि मैंने अभी इसके ऊपर एक और कलर की देनी है, थोड़ा थोड़ा टेक्सचर के लिए आप ये ब्रश से भी कर सकते हैं और आप स्पंज से भी कर सकते हैं, जो भी आपके पास हो, कोई ऐसा नहीं है। इट्स मतलब थोड़ा सा डिफरेंट टेक्निक है, थोड़ा सा टेक्सचर देने के लिए। ओके व्यूअर्स, मैं मिरर के ऊपर जो है डिफरेंट स्ट्रोक्स दे रही हूँ, काइंड ऑफ आई डोंट नो, इट्स विद अ फैन ब्रश से मैं कर रही हूँ। इसका टोटली डिफरेंट इफेक्ट है, क्योंकि इसके ऊपर डिफरेंट किस्म की कार्विंग है। सो लाइक यू नो, इट्स सो विंडी आउटसाइड, तो क्या कहते हैं, मैं स्टैंड पे अपना कैमरा नहीं लगा रही, बिकॉज यू नो एवरीथिंग इज़ गोइंग हियर एंड देयर। तो जस्ट मैं थोड़े से स्ट्रोक्स आप लोगों को दिखाऊंगी, हाउ आई एम लाइक यू नो ट्राइंग टू अचीव दिस लुक।
a little bit heavy in the on the inner side of the border wood ka jo hai, like this one, little bit heavy here, and trying to do lighter on the edges, outer edge. तो sorry अगर कैमरा हिल रहा है, like you know, but let's see, क्योंकि मैं टोटली इसे कवर नहीं करना चाह रही, बट आई डोंट वांट द होल थिंग सो डिफरेंट, थोड़ा सा मैं चाह रही हूँ। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा। अभी आई एम नॉट श्योर बट आई एम गोइंग टू डू इन द मिडल पार्ट, तो लेट्स सी, मे बी इट्स गोइंग टू बी प्लेन और समथिंग। तो चले मैं आप लोगों को ये कर रहा हूँ और फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ओके ओके व्यूअर्स, जो मिडल पार्ट है बिल्कुल जो इसके इनसाइड है, लाइक ग्रोव्स और वट एवर क्रेविसेस, इसके अंदर जस्ट आई एम डूइंग काइंड ऑफ जैसे उसको जैसे काइंड ऑफ लुक के मैंने जैसे फॉयल अंदर गोल्ड फॉयल जो है दिया हुआ है, तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू डू इनसाइड। ओके ओके जी व्यूअर्स, ये सारा जो है मिरर इट्स रेडी। आई डिड ऑल लाइक यू नो विथ फैन ब्रश। सो अभी तो ये ड्राई हो रहा है,